तो 16 अगस्त का है, ठीक है। तो पीएम कॉल फॉर सेकुलर सिविल कोड इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो इन हिज 11 सक्सेसिव एड्रेस टू नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट, Modi seek to do away with communal civil code and end discrimination on the basis of religion. He flags issue of women's safety, says forces of anarchy want to destabilize the country. तो कुछ नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं ये। और पर इन्होंने एक चीज़ बोली है जो अपन को याद रखनी है, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड कह दिया है। तो इन्होंने देखो ये बात कही है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपीटेडली डिस्कस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द इंडिया। अ लार्ज सेक्शन ऑफ कंट्री बिलीव दैट it is true that in civil code that sorry, a large section of country believes, and it is true that in civil code, what we have communal civil code, the need of our is a secular civil code. Only then we will free of discrimination on the basis of religion. It is the duty to fulfill the vision of our constitution maker. प्राइम मिनिस्टर सेड। तो उन्होंने ये बात कही है। तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड कह दिया है, ठीक है। इसको एक याद रखना है, फिर आगे याद रख चले आगे। हम्म, ये वाले देख लेते हैं। डिजिटल बूस्ट टू रिवाइव सोलर पावर इंस्टॉलेशन स्कीम। तो विद द डिले प्लॉगिंग द 34,000 crore PM Kusum program launched to boost solar energy infrastructure and agriculture, states have begun experimenting with the alternative approaches to improve the adaptation. The Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha एवं उत्तम महाअभियान PM Kusum envisages setting up 100 gigawatt of solar power plant in the farmer-owned land and installing 14 lakh solar pumps and solarizing 35 lakh grid-connected agriculture pump. As June, only 256 megawatt of power plant and 3.97 lakh solar pump and 13,500 solar priced pump have been installed. तो कह रहे हैं इतने से ये भी हुए हैं। तो लो अपटेक हैज फोर्स द गवर्नमेंट टू पुश स्कीम्स डेडलाइन टू 2026। तो 2026 तक इसको पुश कर दिया है। अ की हर्डल इज इन द availability of the suitable land. The solar power in India has grown on the back of utility scale power project in Gujarat and Rajasthan, where a vast tracts of desert and uncultivable land are suitable for setting up power plant. With agriculture land, it is often a challenge to find enough parcel of land that can be pulled together and made available to power project developer, said Saurav Kumar, Vice President India. Global Energy Alliance for People and Planet GEAPP. The latter is collaboration of IKEA Foundation, the Rockefeller Foundation, and the Bejo Earth Fund. They work on clean energy adaptation and financing the transition away from the fossil fuel in the developing country. फिर इन्होंने ये सही बात कर रहे हैं और आगे कह रहा है कि वी हैव बीन वर्किंग विद राजस्थान गवर्नमेंट बाय डेवलपिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट यूजेस ड्रोन टेक्नोलॉजी to map land parcel. While this is information that is available to the government, often there is a little institutional capacity to actually execute project. ओके, तो ये कह रहे हैं कि हम डिजिटल उसका यूज़ करें जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का, जिससे पता चले कि कहाँ-कहाँ पे लैंड है और कहाँ-कहाँ पे हम सोलर की प्लेट्स अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे कल्टीवेबल लैंड है वहाँ पे अपन को लैंड नहीं मिल पा रही है। उसके कारण ये स्कीम ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। तब इसको बूस्ट करने के लिए हम जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वही सब ये बता रहा है। सेंट्रल launch a new AI surveillance system to manage pest connect scientists with farmers. The Union government on Thursday launched the National Pest Surveillance System NPSS powered by artificial intelligence to help farmers to connect with agriculture scientists and experts by mobile phone on controlling pests. Launching the program, Agriculture Minister Sivraj Chauhan said the aim was to reduce the dependence of farmers on pesticide retailers and inculcate a scientific approach among them toward pest management. The NPSS will analyze latest data using AI tools to help farmer and expert in pest control and management.
तो ये सब कह रहे हैं कि हम है ना जो पेस्ट कंट्रोल है उनमें हम कुछ किसका यूज़ करेंगे, एआई बेस्ड सर्विलियंस का। तो अभी एनपीएसएस सिस्टम लाए हैं हम, कौन सा, नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम। तो याद रखना है अपन एग्रीकल्चर में कैसे एआई को यूज़ कर रहे हैं, तो एनपीएसएस लेके आ गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूजिंग द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ करेक्ट पेस्टिसाइड एट करेक्ट टाइम इज द चैलेंज एंड दिस सिस्टम विल हेल्प फार्मर टू एड्रेस दिस चैलेंज, यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी देवेश चतुर्वेदी टोल्ड द हिंदू। He said it will also help in addressing the problem of using excessive pesticide। तो इन सब में ये हेल्प करेगी, ठीक है। बस इतना सा याद रखना एनपीएसएस क्या है। फिर पीएम स्पीच हाउ टू टच विद हार्श ग्राउंड रियलिटी से प्रोटेस्टिंग फार्मर। फिर ये सब काम के नहीं, इनको हटा दो, आगे चलते हैं। ये सब भी अपने कोई काम का नहीं लग रहा मेरे को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस एमएसपी इसको हटाओ। फिर है सब काम, कुछ भी काम का नहीं है। क्या, डेथ ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट द हीलर हाईलाइट, इसको भी हटा दो। सीएम अनवील स्कीम फॉर यूथ हटाओ, विल प्रोवाइड। मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। इंडिया स्टिल स्ट्रगलिंग टू प्रिडिक्ट डिजास्टर। सर्वे रिवील्स। देखो, a team of geologists who have been surveying the landslide hit zone in Wayanad on Thursday said heavy rainfall induced damming effect in the densely forested and uninhabited uphill region and has caused massive earthfall that wiped out the three villages at Vaithiri Taluk, the Vetri Taluk of the district on July. The geologist John Mathai, who had a team of experts from the National Center of Earth Sciences investigating the landslide, told me die person that group's finding was merely a preliminary inference. More detailed study under the way, inc- including soil testing and gauging seismic stability. Mr. Mathai said 570 mm of rainfall caused the forest hillock to get waterlogged and saturated soil flowed downward from and form a temporary dam at the Sitamakhandu. The rain further boosted the scale of the sudden top soil discharge from uphill, straining the naturally formed dam and impaling the slope's stability। तो ये कुछ नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि बारिश हुई, बारिश से क्या है, एक नेचुरल डैम बन गया और वहाँ पे मतलब मिट्टी जो नीचे गई थी उसके कारण उसने रोक लिया और एक डैम क्रिएट हो गया। फिर उसके कारण ज़्यादा बारिश हुई तो वो ब्रस्ट आउट हो गया और वहाँ से फिर ये सब हो गया। अपन को तो इतना याद रखना था। इसमें देखो ये रिवर थी, कौन सी थी, ये देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। स्पीकिंग टू मीडिया पर्सन इन वायनाड, रेवेन्यू मिनिस्टर के राजन said 118 person remained missing. Search team were sourcing the mud and debris the cascading landslide had deposited in the upstream। तो इरुवानी पूजा रिवर, तो इरुवानी पूजा रिवर कहाँ पर है याद रखना है एक तो, एंड डाउन स्ट्रीम चलियार फॉर बॉडीज। तो ये दो है, इरुवानी पूजा रिवर और एक चलियार रिवर, ठीक है, इनका याद रखना और आगे चलो। हम्म फिर इंडियन एस्ट्रोनॉमर फाउंड न्यू मेथड टू प्रिडिक्ट एम्पलीट्यूड फॉर नेक्स्ट सोलर साइकिल। तो एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैव फाउंड अ न्यू मेथड टू प्रिडिक्ट द एम्पलीट्यूड of upcoming solar cycle. Beside of their research can also help in space weather forecasting. The astronomers have discovered a new correlation using 100 year of the solar data from IIA कोडाई कोनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो इन्होंने कोडाई कोनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है उससे 100 ईयर का सोलर डाटा यूज करके इसका यूज किया है। द फिर इन्होंने कुछ ज़्यादा तो किया नहीं। व्हाट इज स्पेस वेदर, स्पेस वेदर क्या है ये देख लेते हैं। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ स्पेस वेदर आर द सोलर विंड, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर। दे कैन compress the magnetosphere of the earth and trigger geomagnetic storm which can affect communication, power transmission, damage spacecraft electronic and threaten life of the astronauts।
तो ये क्वेश्चन आया था एक बार 2 साल पहले कि सोलर फ्लेयर क्या क्या कर सकती है, और उनमें यही ऑप्शन थे। दस स्पेस वेदर हैज प्रोफाउंड इन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इनके पास अलग-अलग वे हैं इसको चेक करने के लिए। तो उनके जिसमें वो इंक्लूड करते हैं, एक तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डायनामो मॉडल, और एक है एक्सट्रापोलेशन एंड प्रीकर्सर मेथड। Precursor method use the value of some measure of solar activity at a specific time to predict strength of the following solar maxima। तो किसी एक टाइम पे हम मेजर करते हैं और उसी के अंदाजे पे हम उसको फॉलो करने वाले हम सोलर मैक्सिमा को हम देख लेते हैं, ठीक है। A number of sunspots. In the recent published work, IIA researchers discovered that the width of supergranular cell on the solar surface during the minimum year of the solar cycle is related to number of sunspots seen during the subsequent solar cycle maxima. This simple method can be used in space weather forecasting। तो ये वाला जो मेथड है, ये नंबर ऑफ सन स्पॉट वाला, इसका यूज कर रहे हैं वो वेदर फोरकास्टिंग में। आगे चलते हैं। डिवाइडेड बाय वाटर, रिवर्स एंड पोलराइजिंग पॉलिटिक्स। तो द चार लैंड बियॉन्ड द चार भद्र outpost under the 146 battalion of the VSF, where farmer fishermen cross India Bangladesh border of their livelihood। तो ये कौन सा है याद रखना, जहाँ पे ये एक दूसरे में जाते हैं, वो है चार भद्र आउटपोस्ट, चार लैंड, द चार लैंड, ठीक है। इसमें चेस्ट नहीं दे रखा क्या। तो a villager who cross a river at the Charbhadra border outpost in West Bengal, Murshidabad district, to work on his field। तो ये एक देश से दूसरे देश इधर उधर जाते रहते हैं, क्योंकि इनकी लैंड ऐसे ही पड़ रही है कि मतलब किसी का घर इधर है तो जमीन उधर है, जमीन उधर है तो घर इधर है, ऐसा कुछ समझिए। आगे चलते हैं। Why did Japan Prime Minister step down? So, since coming to office in October 2021, Kishida has struggled to overcome the dire approval rating his party has been dogged by the revelation of ties to the Korean-based Unification Church, as well as the political fundraising scandal uncovered last November। ठीक है, तो इसके कारण है कि इसकी पार्टी को थोड़ा फेस करना पड़ा चैलेंजेस। अब आगे देख लेते हैं। इन अ पोल in late July, 74% of respondents said they did not have want Kishida to stay on as a party leader after the LDP leadership election in September. Despite Kishida's considerable effort to boost Japan's alliance and recent boost in the defense spending, the country also facing an increasingly threatening security environment. Whoever replaced Kishida in September will then have to restore the LDP's electoral fortune before the next national election due by अक्टूबर 2025। तो जो भी है, यही सब टाइम पास है, यहाँ पे तो कुछ नहीं चल रहा। How can traffic which causes air pollution can be controlled? तो इसको पढ़ेगा, पढ़ते हैं इसको, अच्छा है। A recent report stated that India is a home of 83 of most 100 most polluted city in the world. Another report from the British Medical Journal estimated that air pollution led to death of 2.1 people in India, second largest number after China. Over 99% of the population breathe air that is poorer than the recommendation WHO standard। तो 99% तो हमारी वही ब्रीथ कर रही है जो बेकार है, ठीक है। हाउ सीवियर इज एयर पोल्यूशन? द इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएट एस्टिमेट दैट 12% of India's CO2 emission are due to road transport, of which vast majority of particulate matter 2.5 emission are due to the heavy vehicles। तो heavy vehicles निकालते हैं 2.5 emission के PM 2.5। फिर PM 2.5 comprises pollutant which
by being microscopic can reach to deepest part of our lungs, spill over to blood, thereby causing a range of respiratory and cardiovascular effect. Moreover, heavy vehicle contribute significantly to emission of nitrogen oxide, capable of causing similar health effect. NOx contribute to formation of the ground level ozone, worsening the impact of air quality and the heat, which further fuel air pollution in urban context. Several studies have indicated that heavy vehicle contributes up to about 60 to 70% of total vehicular PM. तो ये क्या कह रहा है कि हैवी व्हीकल कंट्रीब्यूट करते हैं 60 से 70% टोटल व्हीकुलर पीएम जो सारे व्हीकल मिलके करते हैं ना उनमें 60 से 70 तो हैवी व्हीकल ही कर रहे हैं फिर अबाउट 40 से 50% ऑफ टोटल एनओएक्स एमिशन इन अर्बन एरिया ठीक है व्हाट आर द सम मेजर्स टेकन टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन so with the transport industry growing at the 9.1 per annum bureau of energy efficiency initiative in developing the draft corporate average fuel economy norm for the car in india is timely and laudable. The timelines to implement Cafe third from 27 to 32 and Cafe fourth from 32 to 37 are practical. The commitment to shift from the modified India driving cycle MIDC to World Light Duty Vehicle Testing procedure from March 31, 2027 is excellent because WLTP offer a more accurate and globally harmonized measure of vehicles' actual fuel consumption and CO2 emission. The proposed emission target for CAFE 3 based on the WLTP at 91.7 gram CO2 एक किलोमीटर में and CAFE 4 at 70 gram CO2 एक किलोमीटर में is achievable ठीक है such strength and such strength CO2 target are essential for driving innovation and encouraging the adaptation of the cleaner technology. In the interest of health of our planet and citizens, these targets should be made non-negotiable. However, the CAFE norm exclude emission by heavy vehicles such as trucks, lorries, other freight vehicles. पर इसमें दिक्कत है ये exclude करता है emission CAFE norm exclude emission by heavy vehicles और इनको Now, what can be done? The what can be done हम कर सकते हैं तो देखो the government introduced a vehicle scrappage policy to phase out old polluting vehicle including heavy vehicle in 2022. It is mandated that passenger vehicle older than 20 year and commercial vehicle older than 15 year must be pass a fitness emission test. If vehicle fail to mandatory test, they are categorized as end of life vehicle and will lose their registration certificate and are recommended to scrappage. Yet this policy is yet to take off the Karnataka for two reasons. There are only two scrap yard for the entire state and it is voluntary. Most older vehicles in Bangalore are not four vehicle but older BMTC buses, private vans and heavy vehicles. Maharashtra is one among the 21 states that announce incentive such as discount on the road tax or on a new private vehicle purchase to encourage scrapping. But this is yet to have far-reaching impact on air pollution in a state. Policymakers must ensure that guidelines do not remain exemplary in the letter alone. Existing policies of the government to combat air pollution, such as testing of vehicles at regular intervals to ensure they are within the emission limit, banning open garbage burning, checking industrial emission, need to be implemented with the greatest stringency. So greatest in stringency, while we welcome the government's effort to curb air pollution, we also strongly suggest that mass transit is only sustainable method of tracking air pollution in India ठीक है तो ये सब इन्होंने बात की एयर पोल्यूशन की कैसे कैसे क्या है और अपने क्या क्या चल रहा है तो जैसे कैफे नॉर्म्स ऑफ कार इन इंडिया इज टाइमली एंड लाउडेबल इसकी बात कर रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का और इतना 12% अपना ये CO2 यहाँ से निकल रहा है तो इसको याद रखना है 4 आर्टिकल है फिर द जीनियस ऑफ यार रहमान ताल से ताल मिला बाढ़ में गया ताल से ताल मैं क्या करूँ फिर instill fear of death in those who attack women होती ठीक है India is emerging as a global hub of defense manufacturing PM पर प्राइम मिनिस्टर कॉल फॉर सेकुलर सिविल कोड तो अपन ने देखा था ये और
Pakistan sending foreign terrorists into Jammu. Lieutenant Governor Nalim Prabhat said to take over Jammu Kashmir DGP. Mob attack failed to kill. Hmm. इसको पढ़ते हैं. The Information and Broadcasting Ministry has argued the Revenue Department to take initiative that exempting digital news subscription from GST. So exempting digital news subscription from GST or bringing the tax rate down 5 to 5 from 18, and the INB secretary has written to revenue secretary in this regard. तो जो डिजिटल न्यूज का सब्सक्रिप्शन है उसमें जीएसटी 18 से 5% करने की कह रहे हैं. द डिमांड में बी taken up in 54th GST Council meeting on September 9. The source said the INB ministry felt that higher tax rate might result in ongoing in the online news sector adopting an advertising based revenue model affecting the quality and credibility of news content. तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उन पर जीएसटी लगाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे. तो बस वही नाटक है, हटा दिया इसको. फिर बात कर रहे हैं, इसको हम करते हैं हिंदू इन फेसिंग वायलेंस. इसको हटाओ. अलाइज बेरी, ठीक है, इसको हटाओ. From far and wide braving the rain amid celebration of India's diversity. हटाओ. चलो इसको देख लेते हैं. Even as a dark cloud loomed over the Red Fort on Thursday morning, A.N. Reddy and his wife, who traveled from the Hyderabad to Delhi to celebrate their wedding anniversary with their two daughters, remained enthusiastic. What better way to celebrate our wedding anniversary? My daughter are coming to Delhi for the first time and were excited, he said. Like every year, the Red Fort saw mix of the people from different part of country on Independence Day, prompting crowd to put on their raincoats. However, the event went planned despite the multiple short spell of rain. At 7:30, Prime Minister Narendra Modi hosted the national flag, which was followed by the national anthem and 21 gun salute. Mr. Modi delivered his longest speech running to 98 minutes as the address country from rampart of the historic Red Fort. After his speech, the Prime Minister greeted the cadets of the National Cadet Corps who were seated at the Janpath opposite the rampart in the formation reading My Bharat. With their tricolor shirt, the cadets have applauded many parts of Mr. Modi's speech, such as his mention of Viksit Bharat. Sonam Chaudhary, 16, school student said, "We have been practicing for 10 days and very excited about this. My favorite part of the Prime Minister's speech was when he spoke about development and bright future of the youth. Nearly 6,000 special guests have been invited in the event, including tribal artisan, ASHA worker, and beneficiary of the union government scheme. 18 members from Farmers Producer Organization from Uttar Pradesh Saharanpur district traveled by train on August 14 to be part of event. Usha Upadhyay, one of the women, said the Prime Minister spoke. Women and farmer, and it was very happy moment for all of us. तो ये सब है यार, इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को, मजा नहीं आया, मतलब कुछ अच्छा नहीं बताया. Exclusive consensus, even those backing UCC demanding exemption communities. Rahul Gandhi seated the. अब यूसीसी पे आगे जब बात करेंगे, बस देख लेते हैं यूसीसी के क्या आर्टिकल है. The Prime Minister Narendra Modi raising the issue of the UCC through the terming it is as secular civil code. Many may be seen as his attempt to trying to complete the third big core issue of the Sangh Parivar after the construction of Ram Mandir in Ayodhya and abrogation of Article 370. But ये सब बकवास है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको देखूंगा टाइगर. तो 57
casual employee of the Namdapha National Park and Tiger Reserve, India's ईस्टर्नमोस्ट टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश. कौन सा? नामदफा फ्लाइंग नामदफा नेशनल पार्क have been reinstated 3 months after their service were terminated. Reinstatement order said engagement was following to approval of annual operation plan of National Tiger Conservation Authority for the financial year choice 25 was contingent on the timely release of fund. These employees were recruited under the NTCS Project Tiger during the 23 choice to strengthen the efforts to conserve the big cat other fauna. They were laid off citing fund constraint on May 1. This had led to series of protests by. तो ये इनके फंड की कमी थी तो इनको निकाल दिया. पर इम्पोर्टेंट ये है कि अपन को कौन सा नेशनल पार्क न्यूज में आ गया, नामदफा नेशनल पार्क. कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में. Heroes welcome await Vinesh in native village as resident stand by her. हटाओ उसको. तो इसको देखते हैं. The firm also conducted user research in 660 the Wing EV to unveil India's first electric microcar. The Indian automobile industry will soon witness new category entrant, an electric microcar. तो ये क्या है? Christened Robin, a two-seater EV that the two-seater EV that the makers say would be maneuverable as a motorbike. Wing EV, an Indore-based firm founded by the father-son duo, will, will unveil Robin in Bengaluru in April 2025 to boost personal commuting with zero pollution, less congestion, and less road space, said the Pranav Dandekar, CEO and co-founder. Mr. Dandekar, a PhD in computer science and a Stanford University graduate, said that Robin has already cleared all safety tests conducted by ARAI Pune to make it safer than exiting two and three-wheeler in market. We hope to sell 3,000 units in first year against the 10,000 annual production capacity of our Indore plant. तो ये ला रहे हैं इसको माइक्रो कार. ठीक है. फिर चाइना said Vietnamese president to Lam will visit 3 days from Sunday in his first overseas trip since he was formally named his country's top leader. China and Vietnam pledged to deepen the bilateral tie when she visited the countries last December, his first time there in 6 years. तो बस यही टाइम पास चल रहा है. Venezuelan Electoral Council say UN report on vote rifle with lies. Venezuela CNE Electoral Council under fire after the declaring a widely rejected election victory for President Nicolas Maduro on Wednesday described an UN report disputing the outcome as "rifle with lies". CNE proclaimed Mr. Maduro the winner with 52% of vote cast in July poll without giving the detailed breakdown. तो बस यहाँ पे इनको इशू है. बस यही अपने काम का है नहीं. वैसे बांग्लादेश मॉब बीटन अप द एक्स पीएम हसीना सपोर्टर्स. इनको हटा दो. डॉटर ऑफ फॉर्मर थाई पीएम to be voted to power. UN to probe atrocities committed during the unrest. इसको हटा दो. फिर है श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल पोल ड्रोन 39. इसको भी हटाओ. कॉलम यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रिजाइन मंथ आफ्टर. इसको भी हटा दो. फिर शरिया रूल तालिबान लास्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम लीडर. इसको सब हटा दो. कोई काम के ही नहीं है.
स्पोर्ट्स में पढ़ता नहीं हूँ। फिर डेंगू कंट्रोल दी अनरिलीज प्रॉमिस ऑफ वेलबोकिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो, तो ये क्वेश्चन आ चुका था लास्ट टाइम, देख लेते हैं। The vector control method have been studied globally since 2009. This method employ the bacterium Wolbachia, which occurs naturally in fruit flies, many insect species in the wild host Wolbachia, but not the Aedes mosquito. तो Aedes mosquito में नहीं है भाई। When infected male mosquito released by the Singapore authorities mated with unaffected female, they produce non-viable eggs, reducing Aedes population by 90%. Singapore estimated that people in release area are 77 less likely to have dengue. The WML strategy has potential in Indian context because we must rely on the more than insecticide due to resistance, safety concern and limited इफेक्टिवनेस। तो हुआ क्या ना, जैसे वेक्टर कंट्रोल मेथड होता है, उसमें क्या हुआ, जो बैक्टीरियम है बोलवेकिया वाला, वो एक फ्रूट फ्लाइज में मिलता है और मैनी इंसेक्ट स्पीसीज इन दी वाइल्ड होस्ट। तो पर ये क्या है ना, बोलवेकियो में नहीं होता, ठीक है। अभी सीधी बात है, जिसमें ये था उसको क्रॉस कर दिया किससे, डेंगू वाले मच्छर से, और जो उनका बच्चा हुआ उसमें क्या है, वो डेंगू वाले गुण नहीं आए, ठीक है, यही सब है। तो इसके कारण क्या है, डेंगू को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो लेके गए एक मतलब जो भी एक मच्छर को जिसमें ये था और जिसमें डेंगू वाला मच्छर है, उसके साथ उनका ब्रीड कराया और उससे फिर उनके बच्चे हुए। तो वो वाले डेंगू नहीं कर रहे हैं, बस ये टाइम पास है, पढ़ लेना इसको, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। देखो, द लेबोरेटरी पर्सनल मैकेनिकली ट्रांसफर WML to cytoplasm as trans infection and after stabilizing successful lines release them into urban area. Countries have successfully used the two strategies, population and suppression and population replacement. Singapore released the infected male do not bite humans into the communities, covering 35% of household. Then these males mate with the unaffected females. They produce non-viable egg. Cytoplasmic instability drastically reduced the Aedes population by 90%. Singapore estimated that people in release area, सॉरी, ये क्या करते हैं, तो बच्चे पैदा नहीं करते, मेरी कह रहा है ना वो, मेड विद अनइफेक्टेड फीमेल दे प्रोड्यूस नॉन बाइबल एग, तो एग तो देते हैं पर वो ऐसे हैं कि वो होते ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यही सब है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, बस मज़े कर रहे हैं ज़िंदगी के। न्यू स्ट्रेन बिहाइंड द कोविड 19 रिसर्जेंस, तो हटा दो बस।